Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about mental health nursing care plan, that is mental retardation nursing care plan or intellectual disability nursing care plan. And through this video you all learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान जिसका नाम है मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ हम देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नर्सिंग केयर प्लान में हम यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग केयर प्लान स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन। तो ये सारे यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशंस होंगे। वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट मेंटल रिटार्डेशन क्या है, देखते हैं यहाँ पर। Mental retardation is a generalized neurodevelopmental disorder characterized by significantly impaired intellectual and adaptive functioning. Intellectual disability, also called developmental disability or mental retardation, any of several conditions characterized by subnormal intellectual functioning and impaired adaptive behavior that are identified during the individual's developmental year. Intellectual disability or mental retardation is characterized by below average intelligence or mental ability and lack of skill necessary for day to day living. तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट देखते हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर, नर्सिंग केयर प्लान फॉर मेंटल रिटार्डेड पेशेंट। सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट यहाँ पर। नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट हो गया पर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट रेस्पॉन्ड इनअप्रोप्रिएटली, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है डिफिकल्टी हैंडलिंग टास्क, कन्फ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन। आफ्टर राइटिंग दिस डाटा वी राइट हियर द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट यहाँ पर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, रेस्ट गोल होगा यहाँ पर the patient will be able to establish optimal mental and physical functioning. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट असेस द पेशेंट लेवल ऑफ कन्फ्यूजन, रेशनल होगा हेल्प इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। रेशनल मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया है उसको अप्लाई करना है। देखते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में असेस द पेशेंट्स लेवल ऑफ कन्फ्यूजन। एवेल्यूशन को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड इंटरवेंशन असिस्ट द पेशेंट परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, रेशनल होगा टू मेंटेन ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रमोट डिग्निटी बाय अलाउइंग द पेशेंट टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ADLS। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है पेशेंट असिस्टेड। नंबर थर्ड सिंप्लीफाइड टास्क फॉर द पेशेंट बाय यूजिंग सिंपल वर्ड एंड इंस्ट्रक्शंस, रेशनल होगा mental retarded patient may have difficulty handling complex task. Implementation लिखना है पर simple instructions given. Number 4 provide opportunity for the patient to have meaningful social interaction but never force an interaction. Reason होगा to prevent feeling of isolation. Implementation लिखना है opportunities provided. Number 5 देखते हैं पर encourage client to discuss experiences. Reason होगा to identify thoughts and feelings. Implementation लिखना है पर encourage client to discuss experience. Number 6 allow the patient to display abnormal behavior within acceptable limits and while maintaining patient safety. Reason में लिखना है to prevent agitation and increase the sense of security. Implementation में लिखना है allow the patient to display abnormal behavior within the acceptable limit. Evaluation. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. इवेल्यूशन लिखने यहाँ पर एस्टेब्लिश ऑप्टिमल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग, जो हमारा
गोल था उसको हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर फर्स्ट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड। केयर प्लान नंबर सेकंड हो यहाँ पर इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन। देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट इज नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड वर्बली एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ineffective social communication behavior, looking bothered, flustered or troubled. After writing these data we rated the nursing diagnosis. So देखते हैं यहाँ पर nursing diagnosis impaired social interaction related to speech deficiency, difficulty of social adaptation. गोल होगा to improve social interaction. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट असिस्ट द क्लाइंट टू मीट बेसिक नीड्स। रेशन होगा प्रमोट द क्लाइंट्स फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर क्लाइंट असिस्टेड टू मीट बेसिक नीड्स। नंबर सेकंड इंटरेक्ट विद द क्लाइंट ऑन मैटर्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू हिम। रेशन होगा टू इनक्रीज सोशल इंटरेक्शंस। इम्प्लीमेंटेशन लिखना है इंटरेक्टेड विद द क्लाइंट ऑन मैटर्स। Number third, maintain a therapeutic environment. Rational the patient might react to the noises and crowds with the nervous excitement. Implementation लिखना है therapeutic environment maintained. Number fourth, design activities that will work both based on the patient's pace and interest. Rational the patient can lose enthusiasm for activity that are too aggressive while sorry which can increase a sense of disappointment. Implementation लिखना है पर activities designed according to patient's interest. Number fifth, teach the family members about mental retardation. This होगा to improve knowledge and decreases the stigma of mental illness. Implementation लिखना है पर teach about the mental retardation. Number six, schedule times each day to incorporate planned times to make short interactions and activities with the patient on an individual basis. This helps patient to experience a non-threatening environment and build a sense of well-being. Implementation is day time schedule. Number seven देखते हैं पर if the patient is not able to respond verbally or in a reasonable method, allow time with the patient more often even in a short period. Rational होगा building companionship with the patient can provide a feeling of being worthwhile. Implementation लिखना है time allotted for response. Number 8 देखते हैं पर prepare simple and compact activities with them. Some examples are painting and looking at a picture. रेशनल होगा a simple activity can help in taking out the patient from depressed thoughts. Implementation लिखना है simple and compact activities prepared. Number 9 देखते हैं if the patient is very withdraw plan है initial one on one activity with a safe person. This logo to develop a safe environment with one person and eventually grow into a structured group activity. Implementation लिखना है activities plan. Number 10 देखते हैं पर try to integrate the patient's strength and interest when the planned activity is not effective. This logo it will increase the patient's cooperation and enjoyment. Implementation लिखना है tried according to strength and interest. Number next, give appreciation and merit for the positive step. रेशन होगा recognizing and acknowledging their development, sustain and increase improved behavior. Implementation लिखना है appreciation given. After writing these interventions, we write the evaluation step for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation में आएगा social interaction improved. मीन्स जो हमारा गोल था to improve social interaction वो हमने अचीव किया बाय डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर सेकंड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड। केयर प्लान नंबर थर्ड को पर इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग वर्बल कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ईयर पॉवर्टी ऑफ स्पीच tilting head as if to listen to something, disorientation, lack of attention. Nursing diagnosis होगा पर impaired verbal communication related to mental impairment. गोल होगा to establish
इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट. Assess and monitor the patient's speech and cognitive ability. This look to help establish baseline data as well as short-term and long-term goal. Implementation में लिखना है यहाँ पर cognitive ability assess. Number second, employ the use of communication techniques. This look to facilitate communication. Implementation में लिखना है communication techniques employed. Number third, provide an environment that is calm, quiet, well lit, and conducive to effective communication. This look having an environment that is free from disturbing stimuli helps in preventing confusion. Implementation में लिखना है calm and relaxing environment provided. Number fourth, speak slowly. Keep voice in low volume. Raise होगा loud and high pitched voice may trigger anxiety, agitation or confusion. Implementation में लिखना है speak slowly. Number fifth, use clear and simple word when communicating with the patient. Raise होगा using simple word and speaking clearly can help the patient understand what is being said. Implementation में लिखना है used clear and simple words when communicating with the patient. Number 6, educate the patient on way to improve verbal communication. This होगा to gradually help the patient achieve effective cognitive thinking and functional speech. Implementation में लिखना है education given to patient. After writing these interventions, we write the evaluation steps for the care plan. तो देखते हैं पर evaluation में तो evaluation में लिखना है पर establish effective verbal communication में जो हमारा गोल था to establish effective verbal communication वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 हो गया पर सेल्फ केयर डेफिसिट. तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट टास्क फॉर हेल्प टू डूइंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है रिफ्यूजल टू प्रैक्टिस सेल्फ हाइजीन, अनक्लीन क्लॉथ्स, अनकॉम्ड हेयर, a bad body odor. After writing these interventions, we write here the nursing diagnosis. तो nursing diagnosis का पर self care deficit related to altered physical mobility and mental disability. गोल होगा the patient will be able to capable of taking care of their own activity of daily livings. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट होगा पर एनकरेज क्लाइंट टू परफॉर्म नॉर्मल activity of daily livings as per activity level. This logo successful performance of independent activities and self esteem. Implementation में लिखना है encourage client to perform activity of daily livings. Number second, discuss with the patient short term objectives regarding self care and plan on how to achieve them. Rational लोगों पर assist the patient in creating achievable goal. Implementation में लिखना है discuss with the patient short term objectives. Number third, provide supervision for every task until the patient successfully demonstrate the skill. This होगा the patient's capacity to carry out self-care procedures may fluctuate frequently throughout time and will need to be monitored on a regular basis. Implementation लिखना है patient supervised. Number 4 देखते हैं पर encourage the client to complete activities of daily living or activities of daily living ADLS to the best of their ability. रेशनल होगा सेल्फ एस्टीम इज रेज्ड व्हेन ऑटोनोमस टास्क आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली. इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है एनकरेज द क्लाइंट टू कंप्लीट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग और ADLS to the best of their ability. Number 5, maintain a regular schedule and give the patient enough time to finish the task. रेशनल होगा getting used to a routine makes it easier and less labor intensive. This aids the patient in planned and executing self-care techniques. Implementation में लिखना है maintain a regular schedule and give the patient enough time to finish the task. Number 6, assist patient while activity of daily living. रेशनल होगा assistance provide easiness to doing daily living activities. Implementation में लिखना है patient assisted while activity of daily living. Number 7 लिखना है recognize individual accomplishment and provide encouragement. रेशनल होगा self esteem is raised and desired behavior are encouraged to be repeated via positive reinforcement. Implementation में लिखना पर recognize individual accomplishment and provide encouragement. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं care plan नंबर 4 का evaluation.
इवेल्यूशन लिखना है हमको यहाँ पर। नाउ पेशेंट इज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर ऑन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। तो केयर प्लान नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5। फिफ्थ केयर प्लान हो गया रिस्क फॉर इंजरी। तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है हमको नॉट एप्लीकेबल, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है ओवर एक्टिविटी। नर्सिंग डायग्नोस्टिक पर रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ एग्रेसिव uncontrolled motor coordination. Goal होगा to prevent risk for injury. Planning or intervention देखते हैं first. Keep low noise level and low light level and maintain low level of stimuli. Relation होगा as the response to even the slightest stimuli are accelerated. Implementation लिखना है low level of environment stimuli maintained. नंबर सेकंड देखते हैं remove dangerous object from the client's surroundings. relation होगा to prevent injury. Implementation में लिखा dangerous objects remove. number third encourage client to involve the physical activity. relation होगा to divert patient mind. Implementation में लिखना है encourage for the physical activities. number fourth stay with the client during hyperactivity. relation होगा to provide support and security. Implementation में लिखना है यहाँ पर stay with the client during hyperactivity. number फिफ्थ एडमिनिस्टर ट्रैंकुलाइजर्स एज प्रिस्क्राइब. relation होगा एज थेरेप्यूटिक रेजिमेन. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है ट्रैंकुलाइजर्स एडमिनिस्टर्ड. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइटेड द एवेल्यूशन स्टेप फॉर दिस केयर प्लान. तो देखते हैं यहाँ पर एवेल्यूशन में एवेल्यूशन लिखना है हमको यहाँ पर नाउ रिस्क फॉर इंजरी प्रिवेंटेड मीन्स जो हमारा गोल था टू प्रिवेंट रिस्क फॉर इंजरी वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 5 को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. और ये थे हमारे मेंटल रिटार्डेड पेशेंट के लिए केयर प्लान्स जिसमें हमने टोटल 5 केयर प्लान यहाँ पर देखें. तो आप वीडियो की सहायता से आसानी से अपने नोट्स असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.